ये ओबी के अपने कितने थ्योरीज हैं? So we can say it does not have its own theories. It has borrowed theories, it has borrowed principles, it has borrowed different things from different subjects. Unlike, like if we say science, physics, if we talk about, it has its own theories, it has its own principles, it has its own rules and regulation, which is not there in case of organization behavior. Whatever theories organization behavior explains, like theories of motivation, theories of leadership, theories of learning, they have OB has taken all these theories, all these principles from different subjects. What all these subjects are, we will discuss in next point. So next point is talks about that only, interdisciplinary approach. जो पॉइंट मैं अभी एक्सप्लेन कर रही थी कि ये इंटरडिसिप्लिनरी है, डिफरेंट डिसिप्लिन से इसने कंसेप्ट्स को, आइडियाज को बोरो किया हुआ है। जैसे कुछ आइडियाज, कुछ थ्योरीज, कुछ चीजें साइकोलॉजी से बोरो की हैं, कुछ चीजें पॉलिटिकल साइंस से बोरो की हैं। व्हाट एग्जैक्टली, व्हाट एग्जैक्ट टॉपिक्स इट हैज बोरोड, दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट later in today's discussion. So various disciplines like psychology, political science, sociology. So it has taken different concepts, different ideas from all these subjects, और उन सबको मिलाकर वो भी एक फील्ड ऑफ स्टडी बन जाता है जो कि बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन से मिलकर बनता है. That is why it is called as interdisciplinary in approach. Third thing that OB talks about is it is applied science. What is the difference between applied science or fundamental science? Applied science, when the things are used in application. Application, can anyone write in chat box? What is the difference between application and fundamental pure science? क्योंकि आपकी आवाज तो मुझे जो समझ आ रहा है कि सुना ही नहीं दे रही. I'm not audible. Why someone is saying I'm not audible? Is it so? You can write in chat box. You can write in chat box. Am I audible? Okay. So, can you tell me what is the difference between fundamental science and applied science? Yes, any one of you? Yes, in last semester also, I must have discussed this application thing. What is the meaning of application? Simple example, temperature. टेम्परेचर का हम कंसेप्ट समझते हैं और उस कंसेप्ट को क्या हम डायरेक्टली यूज करते हैं. लाइक वी नो दैट yes, fundamental is theoretical and application is more practical. Like हमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पता, लाइक इन दिस प्रेजेंट कोविड एरा में एक चीज हम चेक करते हैं. फर्स्ट इनिशियल चेक हम क्या करते हैं, whether the body temperature is okay or not. और ओके की भी कुछ कंडीशन है, इज इट 97.6 और मोर देन दैट. प्योर साइंस कहता है दैट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 97.6. बट how this is used, how this thing is applied, this knowledge is applied, कि अगर इससे ज्यादा body temperature है, that means you may have, it is not sure shot thing, you may have COVID infection. Okay. Next, it affects COVID का एक pure science का अगर हम देखेंगे, it affects lungs, रेस्पिरेटरी आपका जो कैपेबिलिटी है उसको अफेक्ट करता है. सो अगेन हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड,
This information is used by checking how much is your respiration or breathing capability, for how long you can hold your breath. जैसे in general आपको message के initial check करना है whether you have this particular infection or not, तो body temperature लीजिए, अपनी सांस को breathing को stop करके 10 or 20 तक काउंट कीजिए. If you can hold your breath up to 20 count, that means you are perfectly okay. You're not having any problem. But if you cannot hold your breath, uneasy feel कर रहे हैं, breathlessness feel कर रहे हैं, then you may have this particular infection. Okay, so these are all application of pure science, isn't it? जैसे फिजिक्स में हमें रेडियो एक्टिव कुछ एलिमेंट्स खोज के दे दिए, पीरियोडिक टेबल इज हमें पता है, उनके वैलेंस, आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग्स क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्योर साइंस से रिलेटेड है. बॉन्डिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इजंट इट? आप लोगों ने 12th में या कभी साइंस लिया होगा या 10th में आपने ये सारी चीजें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी. सो दैट इज प्योर साइंस. एंड हाउ दिस प्योर साइंस इज यूज्ड इन एप्लीकेशन बाय फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग डिफरेंट एलिमेंट कंपाउंड्स. कि अलग अलग कंपाउंड्स हम कैसे बना सकते हैं, कौन सा कंपाउंड किसके साथ रिएक्ट किस तरह से करेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या बाय प्रोडक्ट बनेगा. ऑल दीज थिंग्स वी यूज इन एप्लीकेशन फॉर डेवलपिंग मेडिसिन और अदर थिंग्स. So that is applied science. So OB is applied science. How it is applied science? All the theories that we are getting from different subject, motivation की theory हो गई या learning की theory हो गई, how all these theories can be applied in your organization for different purposes. That is application of organization behavior. All these theories, all these information can be used to control or predict behavior of employee in organization. That is application. हम उसको information को in simple as it is हम नहीं लेके रख ले रहे हैं, हम information collect कर रहे हैं, हम चीजों को employees के बारे में कुछ knowledge gain कर रहे हैं, and we are using that knowledge, we are using that information for different purposes, like we are using that to predict behavior of employee in organization, we are using that to control behavior or to modify behavior of employees in organization. That is why it is applied science. Next, it talks about normative. Norms एक word एक आप लोगों ने सुना होगा. So, do you understand what norm is? Do you understand what norm is? Guidelines. Yes, okay. और क्या होता है norm? What norm is? Generally, हम बात करें, these are not norms of our organization, ways in which you should behave, ways in which you should present things, a general simple standards of doing particular things. So OB is normative science. It takes certain values, it takes certain things in consideration, and it establishes norms for behavior in organization. आपको organization में किस तरह से in general behave करना चाहिए, what are the different things that decides environment of organization, किस तरह से team में आपका behavior होना चाहिए. Again, it establishes certain norms. जैसे आप simple आपके भी कुछ groups बने होंगे और उन groups में आपके कुछ rules and regulations sort of things, not exact that defined. हम उसको उस तरह के rules नहीं बोल सकते कि जिन अगर वो आप follow नहीं करेंगे, something against you will be done. Simple rules होंगे आपके, जैसे if you are in group of 5 friends, आप 5 दोस्त हैं, 5 दोस्तों का ग्रुप है, तो एक नॉर्म स्टैब्लिश हो गया है कि भाई बर्थडे पे हमें रात को सबसे पहले विश करना है, isn't it? ये हम ग्रुप 5 लोगों के ग्रुप में जिसका बर्थडे है, बाकी 4 लोग उसके लिए केक लेके जाएंगे. दिस इज नॉर्म. ये पर्टिकुलर
किसी ओकेजन पे हम इस तरह से कुछ चीजें करेंगे, तो वो एक ग्रुप नॉर्म स्टैब्लिश हो जाता है। रूल्स नहीं है ये, लेकिन दीज आर जनरल वे इन विच यू शुड बिहेव इन ग्रुप. We should support each other. We should do this thing. We should do that thing. So OB is that normative science. It understands people and it predicts people. It establishes norm for behaving in organization. Okay. Okay. Next it says humanistic and optimistic. Humanistic, it takes into consideration human being is center. जो जब भी हम ओबी की बात करते हैं तो सेंट्रल एलिमेंट क्या है? ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, वी आर टॉकिंग अबाउट बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉइज आर ह्यूमन. इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन कि वे ह्यूमन है, they behave differently at different times, ways of behavior can be different, you cannot predict them in absolute manner, but up to a certain extent it can be predicted. And optimistic, it always talks about positive things, it always talks about improving things like modifying behavior, modifying group norms, it talks about all these things. So it takes into the central idea, central thing, इंडिविजुअल की बात करें, ग्रुप की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सेंटर क्या है स्टडी का? ह्यूमन बीइंग. And it consider that things can be done. Optimistic है कि positive way में चीजें होंगी. We can modify people, we can change people, we can manipulate them, we can control them. So this makes optimistic thing. So OB is optimistic in nature. Next, whatever we are doing in organization behavior, we are observing people, we are predicting people, we are controlling people, we are manipulating them, and everything is towards fulfillment of organizational objective. The sole purpose of all these things, whatever we are doing in organization, is fulfillment of organizational objective. And last, it is total system approach. When we say total system approach की बात करें तो different systems can be there. System is something which जिसके अलग अलग parts होते हैं. जैसे एक सिंपल हम ट्रेन को कंसिडर करें, ट्रेन कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिस्टम, और वो सिस्टम कैसे है? अलग अलग बोगीज है, ऑल दीज बोगीज आर इंटरकनेक्टेड, और वो सारे एक साथ काम करते हैं. सारे बोगीज सेपरेटेड है, लेकिन वो जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो वो एक टोटल ट्रेन बना गया. ट्रेन केवल इंजन नहीं होता, ट्रेन केवल बोगीज नहीं होता. When they are connected with each other, when they become train. और if दूसरा अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम कैन बी क्लोज्ड सिस्टम और ओपन सिस्टम. क्लोज्ड सिस्टम क्या है? जिसका बाहर से कोई एक्सचेंज नहीं होता. जैसे आपने एक कुकर के अंदर आपने कोई चीज रख दी है, जब तक प्रेशर रिलीज नहीं हो रहा है, it is closed. Can we consider cooker as total closed system? बताइए, सिस्टम क्या है? सिस्टम जो एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हमने बार बार हम एक चीज रिपीट कर रहे हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन. Individual is different from group, group is different from organization, and organization again is different from individual. So these are separate, but they are connected with each other. Individual make group, group make organization. So these are related to each other. Organization is not a closed system. Closed system जो जहाँ बाहर से कहीं कोई exchange नहीं होता है. अगर हम organization की बात करें, it takes many things from surrounding, और ऑर्गेनाइजेशन का सराउंडिंग पे भी इफेक्ट होता है. इफ वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन, और उसका इंडिविजुअल का इम्पैक्ट भी होता है ग्रुप में. ग्रुप 5 लोगों का है, उसका मतलब ये नहीं कि किसी इंडिविजुअल का उसका इम्पैक्ट नहीं होगा. एक इंडिविजुअल ग्रुप की चीजों को अफेक्ट करता है और एक पूरा ग्रुप इंडिविजुअल को अफेक्ट कर सकता है. जैसे सिंपल, आपके फ्रेंड्स किस तरह से रहते हैं, क्या ड्रेसअप होता है, किस तरह की बातें करते हैं, उन सभी का असर आपके ऊपर आता है. जनरली अपने अगर आप
सिंपल, किसी से बात कर रहे होंगे और किसी से अगर आपने गलत बात की होगी तो सबसे पहले कैसे लोगों के बीच में रहते थे? आर यू लर्निंग दिस थिंग फ्रॉम योर फ्रेंड्स? घर में अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि अगर हमने कोई गलत बात कह दी तो घर वाले पूछते हैं, आर यू लर्निंग दिस थिंग फ्रॉम योर फ्रेंड्स? ऑल दीज थिंग्स स्कूल में जाके तुम या कॉलेज में जाके तुम यही सब सीखते हो, एंड सेम थिंग इज एट कॉलेज और स्कूल कि घर में तुम्हें यही सब सिखाते हैं. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि आसपास की चीजों पे आपका असर पड़ रहा है, कि आसपास की चीजों का आपके ऊपर असर पड़ता है और आप भी आसपास की चीजों पे असर डालते हैं. ओके, so this is nature of OD, that it is a field of study. Sorry, it is not a field of study, it is a discipline, and this particular discipline is not like it has taken various things from various disciplines. That is why it has not theories of its own, it has not any principle of its own. Everything it has borrowed from different other discipline, and that is why it is called interdisciplinary approach. And whatever information, whatever theories, whatever things we learn, और जो भी हमें इसमें knowledge मिलता है उसको हम अप्लाई करते हैं. और अप्लाई किस चीज में करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए. It establishes norm, it is humanistic and optimistic in approach. Whatever we are doing, we we are doing it for fulfillment of organizational objective, and it is a total system approach.